Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 54 for that topic body fluids and circulation. Now we have been learning regarding the composition of blood. We have studied blood has got two main parts, plasma and the formed elements. We have already discussed in much detail about the plasma. Do refer all that points given there for plasma in the last video particularly, and do watch that video. Now formed elements is the name given to the blood corpuscles or the blood cells. Okay, and they are of three kinds, you know. One is the erythrocyte, other is the leukocyte, third is the platelets. Erythrocytes, leukocytes and blood platelets. Erythrocytes are also called as red blood cells or red blood corpuscles. Then leukocytes are called as the white blood corpuscles, white blood cells. And blood platelets are sometimes called as thrombocytes. All kind of the cells we shall learn in detail, because from MCQ point of view, that each and every point is very important there. Okay. Now regarding erythrocytes or that particular RBCs, I will say that they are the most abundant cells in the blood. And because of their red color, the blood is also red color. And they are in maximum number. How many? Their count is near about 5 to 5.5 million per cubic millimeter. 5 to 5.5 million per cubic millimeter. एक क्यूबिक मिलीमीटर अगर हम ब्लड लेते हैं तो उसमें उनका जो काउंट है वो है 5 to 5.5 मिलियन. अभी आप कहेंगे ये किसने काउंट किया, कैसे काउंट किया? सो जब whenever you will go to that medical science course there, पहला प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट यही होता है. आप पूछेंगे आपको कैसे मालूम है? That whenever students come to meet me and whenever I ask what is going on there, in the first semester they come with excited mood. मैं तो पूछता हूँ यार वो डेड बॉडी देख के आप डर गए क्या? और कैसा लगा आपको? एंड देन व्हाट वाज द पर्टिकुलर फर्स्ट प्रैक्टिकल? तो वो कहते हैं सर आरबीसी काउंट निकालना है. सो आई वाज वेरी क्यूरियस. आई आस्क्ड देम हाउ दैट आरबीसी काउंट इज कैलकुलेटेड देयर. तो बोलते हमको भी मालूम है एक फॉर्मूला होता है, उस फार्मूला में उसको फिगर को ये करना है, हमको जस्ट पुट दैट वैल्यू देयर इन दैट फार्मूला. In one square box, whatever the number of RBCs are observed under the microscope, that only I have to count, and then that are put into that formula and I will get the answer like that. तो ये 5 to 5.5 million per cubic mm of blood, maximum or abundant number of RBCs, but in normal healthy man, normal healthy person I will say. वुमन में ये थोड़ा कम होता है 0.5 मिलियन से. ओके, एंड दैट्स व्हाई वुमन आर फिजिकली समवॉट वीक एज कंपेयर टू दैट मैन. बट ये स्टेटमेंट मैं फिर एक बार कहता हूँ दैट आई शुड नॉट से लाइक दिस. अब कंपेरेटिव बेस में अगर देखेंगे तो कई बार हम देखते हैं महिलाएं जो सशक्त महिलाएं जो है दे आर मोर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द वीक मैन. सो ये रिलेटिव टर्म है. But the number you have to remember like this, 5 to 5.5 million per cubic mm of blood. Okay. Then they are formed in red bone marrow. अब ये जो particularly erythros word है, erythros word का मतलब क्या है? Red. So they are red colored, and that's why they are called erythros means red. They are produced in the red bone marrow in the adults and in the liver and spleen in the fetus. They are produced in the red bone marrow in adults and in the liver and spleen in the fetus. And they are required every day. Every day they are produced there. 72 hours लगते हैं उनको प्रोड्यूस करने में. And the process of formation of RBCs जो होता है in that erythropoietic center, that is known as what? Erythropoiesis. उस प्रक्रिया को बताया जाता है
इरिथ्रोपोएसिस और हीमोपोएसिस। एक एडिशनल पॉइंट है, जरूर ध्यान में रखो, कभी आया नीट में तो। इरिथ्रोपोएसिस मीन्स व्हाट? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RBCs in the red bone marrow, okay, and that requires near about 72 hours. In the adult, it occurs in the red bone marrow, but in the fetus, it occurs in the liver and spleen. और जब तक फीटस होना है तब तक यॉक सैक में पहले आरबीसी आते हैं, एंड एक बार फीटस में लिवर स्प्लीन बन गया, देन दैट आर स्टार्टेड टू grow there, form there in the liver and spleen. Then another important point is that their lifespan is average 120 days. आरबीसी का लाइफ स्पैन जो है 120 डेज का है, ओके, 120 डेज यानी 4 मंथ्स। अभी कभी कभी क्या आता है, व्हेन वी लर्न बाय हार्ट द टर्म 120 डेज, तो वो दिमाग में फिट हो गया, और एमसीक्यू अगर आ गया, द लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसी इज 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, तो वो उतना टाइम हम जो एक आध बार गड़बड़ कर सकते हैं, ओके। तो दोनों भी ध्यान में रखो, 4 मंथ्स और 120 डेज, ओके। देन अनदर थिंग, दैट आफ्टर द डेथ, द डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट आरबीसीज इज डन देयर, एंड दैट इज डन इन द ऑर्गन लाइक स्प्लीन। स्प्लीन नाम का जो ऑर्गन है वहां पे वो डिस्ट्रॉय किया जाता है डेड आरबीसी का, इसलिए उसे कहते हैं ग्रेव यार्ड और स्लॉटर हाउस ऑफ दैट आरबीसीज इज नथिंग बट स्प्लीन। तो ये एमसीक्यू आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए स्लॉटर हाउस ऑफ आरबीसीज, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज, बिल्कुल हमको आ जाएगा, समझ में आ रहा है। Then another thing is there, particularly these RBCs are biconcave and enucleated. Enucleated का मतलब क्या आ जाएगा? Non-nucleated, no nucleus. Okay, they are without nucleus, and they are biconcave. Biconvex हमें मालूम है, दोनों साइड से 16। Biconcave means दोनों साइड से अंदर गया हुआ, इरेंट इट। अभी ये आएगा, ये बाय कॉन्केव, ये एक कॉन्केव हो गया, और ये जो है वो कॉन्वेक्स हो गया। तो ऐसा दोनों साइड से ऐसा ही अगर हो गया, दैट विल बी कॉल्ड एज द बाय कॉन्केव, ओके। इट इज बाय कॉन्केव, एंड दैट इज व्हाट यू से दैट पर्टिकुलरली इन्यूक्लिएटेड। इन्यूक्लिएटेड का मतलब जिसमें न्यूक्लियस नहीं है। अब ये ध्यान में रखो दैट मोस्ट ऑफ द mammals have got this character there, सस्तनी प्राणी जो है, that they are having RBCs without nucleus, without nucleus। उसको एक ही अपवाद है, that except camel। ये हमें क्लासिफिकेशन में भी हमने पढ़ा है, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखो। and other classes are there, Pisces means fish, then that particular amphibians, then that particularly that reptiles, so they are particularly having nucleated RBCs, but mammals are only that which are having the RBCs without nucleus। ये ध्यान में रखो, एक क्लासिफिकेशन में भी आया था ये पॉइंट, देख लो। then another important thing, that these RBCs contain one red colored iron containing complex protein, red colored iron containing complex protein। just a minute, रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। मैं जाके वहाँ पे थोड़ा धूप आ रहा था, स्क्रीन पे दिख रहा था, उसको जरा ढक दिया, ओके, नथिंग एल्स। देन दैट पर्टिकुलरली व्हाट आई वाज सेइंग, दैट इट इज कंटेनिंग रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन देयर विच इज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, एंड दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। वो रेड कलर्ड है, इसलिए
आरबीसीज रेड कलर्ड है, हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसीज आर रेड कलर्ड, एंड आरबीसीज आर रेड कलर्ड, दैट्स व्हाई आवर ब्लड इज रेड कलर्ड, and that's why we become red colored when we become very much angry. So don't be angry. Okay, then another thing, that particularly 12 to 16 gram of hemoglobin is present per 100 ml in the normal healthy individual. अगर नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है, कई बार हम सुनते हैं वीकनेस आ गया है, हीमोग्लोबिन कम हो गया है, पर्टिकुलरली वुमन में वो ज्यादा होता है. तो अगर हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ना है तो डेफिनेटली ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह ज्यादा खाओ, डेफिनेटली यू विल गेट दैट आयरन एंड हीमोग्लोबिन विल बी फॉर्म. सो 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml इज नॉर्मल. 12 के नीचे अगर आ गया तो वो कम माना जाएगा. एंड वेन एवर द हीमोग्लोबिन विल बी वेरी मच रेड्यूस, वेरी मच डिक्रीज, उसको कौन सा डिसीज बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज एनीमिया. क्यूमिया, एनीमिया कहते हैं उसे, isn't it? Where the hemoglobin count is reduced, then that is called as anemia. Then another important thing is that whenever the excess of RBCs are there, they are stored in the spleen. और एक पॉइंट एडिशन मैंने दिया है, जैसा 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन है पर 100 ml इन द नॉर्मल इंडिविजुअल एडल्ट, तो फीटस में वो ज्यादा होता है. 20 to 22 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द फीटस. और पर्टिकुलरली जो हिल रीजन में है, वहां पे कश्मीर साइड में गए तो ऐसे रोजी चिक्स दिखते हैं. वाई दो रोजी चिक्स आर देयर, ऐसा लाल 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 गाल क्यों दिखते हैं वहां पे? बिकॉज हीमोग्लोबिन इज मच मोर ग्रेटर. तो वाई हीमोग्लोबिन इज ग्रेटर? बिकॉज ऑक्सीजन amount is less there at higher altitude, and that's why Kashmiri people will have rosy cheeks sometimes. अगर आ गया MCQ में तो मालूम होना चाहिए. So I hope you have got all these points. और ये आदत रखो, या अगर points लिख के रखेंगे ऐसा, then definitely you will remember it very nicely. और रिविजन करते टाइम भी ऐसे लिखते जाओ तो उसका definitely आपको हेल्प हो जाएगा. Do like and share this video to the friend circle, and do subscribe to my XIth Biology and XIth Biology Shorts channel. In the next lecture, we shall learn leukocytes and their types and the platelets. Thanks a lot.